Good morning everyone. Welcome to Virtual Studio Sundargarh. I am Srikant Sahu from Government High School Kinjirma. Dear students, today we are going to start a new lesson, and this is the last prose lesson of your English book. And this lesson tells you about a very beautiful story, the story of a small boy and the story of bravery and courage. So let's go to the smartboard and start our discussion. So let us try to know about the writer of this story. The name of the story is A Hero, and the writer, the author is R.K. Narayan. His full name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. He was born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. He was one of the greatest Indian English novelist, short story writer. He is best known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. Pilamane, writer R.K. Narayan, he had created a fictional town. काल्पनिक सहर गोटे से तैयारी करथिले तांकर कहानी मान जोठी से टाउन रे मालगुडी टाउन रे तांकर स्टोरी गुडा को बेस हेकी रही छी एवं तांकर अनेक गुडी राइटिंग्स जोटा फेमस रिनाउंड राइटिंग्स गुडा को रही छी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. आहरी मध्य अनेक गुडी शॉर्ट स्टोरी से लिखी छंती जोटा कि मालगुडी डेज बोली कि गोटे तांकर बुक्स रही छी. ओके, पिला माने आरके नारायण he got or received many prestigious awards just like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, which are the second and third civilian award of India. Then Sahitya Academy Award, Fellowship Award पाइथिले से, then Benson Medal. एवं आगोटे जिनस आम ये लक्ष्य करिबा, one of his novel, that is The Guide, it was adapted for film. That means The Guide को नहीं कि गोटे मूवी तैयारी हेइतला एवं the movie or the film won the Filmfare Award. Filmfare Award पाई मनोनीत होइतला सेटा पाइथिला मध्य. तो तांकरी आरके नारायण करो गोटे सुंदर स्टोरी कहवा एठी छोट शॉर्ट स्टोरी अछि मैं पढिबा ए हीरो. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. For Swami, events look an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight of Italy, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. Okay, this is the first paragraph. Let us try to understand. So this paragraph is about
So the first line, let's see. Swami, for Swami, events look an unexpected turn. तो ये पिला माने मीनिंग कौन हम ये अनएक्सपेक्टेडली तार जीवन जो घटनावली गुड़िक इवेंट्स गुड़िक अनएक्सपेक्टेड टर्न अर्थात मोड़ नहीं तार जीवन विभिन्न घटनावली गुड़िक सेटा कौन थिला हमें पढ़िबा परवर्ती समय जानि परिबा. एंड स्वामीज फादर he was reading a newspaper article. गोटे न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ुतले. He was sitting under the hall lamp and he said to Swami, and what was the news? The news is about a village lad. Lad means boy. Lad means boy. A village boy, and the boy was returning home by the jungle path. घर को फेरुला पिलाटी जंगल रास्ता देकी घर को फेरुसी. And at that time that boy came face to face with a tiger. अर्थात टाइगर ता सामने को आसी जाइछि. टाइगर सहित मुहामुही से हे गला. And at that time what did the boy do? से कौन करथिला पिला माने एवं सेही पैराग्राफ जो Swami's father was reading, that paragraph described the fight the boy had with the tiger. पिलाटी बाघ सहित जो फाइट करिछि से पैराग्राफ से फाइट विषय रे डिस्क्राइब करिछि. एवं the boy was obviously he was a little boy and his flight of a tree. The little boy he climbed up a tree गछ पर चढ़ी गला से and he stayed for half a day. He stayed on the tree, he climbed over the tree and stayed there for half a day. अधा दिन सी गछ उपर बसिकी रहिला. एवं he waited for help साहाज्य पाई. एवं after some time some people came that way. किसी लोक सही रास्ता रे आसिले and killed the tiger. बाघ को से माने मारी छंती and पिला ताको रक्षा कले से पिला को. तो ए पैराग्राफ ता न्यूज़पेपर आर्टिकल रो जो पैराग्राफ थिला से पैराग्राफ ता थिला से पिला विषय रे द bravery of a young boy. And after reading it through, father looked at Swami fixedly and asked. एटा को पढ़ी सारी देले आर्टिकल को पढ़ी देले. पढ़ी सारिबा परे Swami Bappa, Swami's father, said to Swami, and he asked to Swami, प्रश्न करुछंती, what do you say to that? What do you say? You listened to the article, you listened to the bravery of a young boy, and what do you say to that? A article विषय, what is your opinion? Swami's father asked the opinion of Swami. And here we see there are two different opinion, different views on newspaper report. Swami ra तार view अलगा थिला, तार चिंताधारा अलगा थिला, and Swami's father's view or opinion was different. Both father and son's opinion were different about the newspaper report. So let us see what Swami's opinion about the newspaper article. Swami said, Swami कौन कहूची? I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all.
तो स्वामी कहूसी से जो व्यक्ति से जो पिलाटी बाघ पाखु रक्षा पाई गला आई थिंक मु भावुची ही मस्ट हैव ए ग्रोन अप पर्सन एडल्ट ग्रोन अप मीन्स बड़ पिला हितु निश्चित भाव में ग्रोन अप हितु नॉट ए स्मॉल बॉय एट ऑल छोट पिला नुह एंड स्वामी कहूसी आई थिंक ही मस्ट बी ए वेरी स्ट्रांग पर्सन ग्रोन अप एवं ता सहित स्ट्रांग हेतिबो टिके शक्तिशाली हेतिबो जहा फल रे से बाघ पाखु रक्षा पाई गला हाउ कुड एवं से प्रश्न करूसी बापा को हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर हाउ कुड गोटे पिला बाघ सहित केमती फाइट करि परबो हाउ कुड ए बॉय फाइट विथ ए टाइगर इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू स्वामी इट इज इम्पॉसिबल दैट ए स्मॉल बॉय कुड फाइट विथ ए टाइगर छोटा पिलाटा बाघ संगे लड़ी की रक्षा पाई गला अकॉर्डिंग टू स्वामी it was impossible it was Swami's opinion now let us see what his father said papa कहते you think you are wiser than the newspaper you think tu भावुछु you are wiser than the newspaper अर्थात न्यूज़पेपर तो बेसी ज्ञानी father sneered से भाया फेसियाल एक्सप्रेशन देले जिभली कि से तार मंतव्य सहित एकमत नुहंती स्वामी रो जो ओपिनियन थिला हिज फादर वाज नॉट एग्री विथ द ओपिनियन ऑफ स्वामी एंड हिज फादर स्नियर्ड यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर बोली कि से कहउसंती तू कोन भाबुछु न्यूज़पेपर तो बेसी जानिछु बेसी ज्ञानी तू A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. So, कहते a person or a man may have the strength. Strength means power, strength, ताकत, शक्ति. कहाँ सहित an elephant अर्थात जनक पाखरे हाथीर बल थाई पारे strength थाई पारे A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. Coward means fearful, भयालु, डरुआ. लोक पाखरे एलिफेंट स्ट्रेंथ रही हाथीर बल रही बट yet he may be a coward. बल थिले कौन हबो सीए मे भी ही पारे भयालु ही पारे डरुआ ही पारे एवं एनादर एग्जांपल से दउसंती व्हेरेज एनादर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टिव मींस पिला माने एक डिजीज जोटा कि हमर लंग्स सहित जड़ित जोटा कि हमें ओडिया रे जक्ष्मा रोग बोली कि कहितो जोटा कि मनुष्य को बहुत दुर्बल कर दिए दैट मींस वीक कंजप्टिव स्ट्रेंथ दैट मींस वेरी वीक पर्सन पापा कहले another person very weak person strength of a conjunctive strength रही भाया जड़े व्यक्ति but having courage he can do anything पापा कहले having courage जनकर हाथी भाया बल थाई पारे यदि ता पाखरे साहस नहीं करेज नहीं ताहले से हेगला जने भीरू व्यक्ति बट व्हेरेज ए पर्सन और ए मैन हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टिव बट इफ द पर्सन हैज द करेज देन ही कैन डू एनीथिंग पाखरे जदि साहस अच्छी करेज अच्छी ब्रेवरी अच्छी देन ही कैन डू एनीथिंग राइट very important thing you can see here courage is everything courage एठी हमर गोटे इंपोर्टेंट लेसन सिखिवार अछि पिला माने सबु थारो बेसी मूल्यवान जिंस होउची courage ओके अकॉर्डिंग टू स्वामी's फादर स्वामी रो बापांकर मतरे
करेज होची सब किछि स्ट्रेंथ एज आर नॉट इम्पोर्टेंट अर्थात जनकर पाखरे केते शक्ति अछि जनकर बयस केते एज केते हिची तार दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इफ द पर्सन हैज a lot of courage then he can do everything right अर्थात आम भीतर साहस रहिबा दरकार केते शक्ति अछि केते स्ट्रेंथ अछि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज आवर एज दिस इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट ओके so we see there are two different views according to Swami that boy was not a small boy he must be a grown up person according to Swami but his father said कौन कहले से ना courage is everything strength and age doesn't matter or strength and age is not important right okay so here Swami disputed the theory Swami से जो theory टा थिला बापांकर theory कौन थिला father कहले courage is everything एज आउ स्ट्रेंथ टा इम्पोर्टाट नुहे तो स्वामी से थ्योरी टा को डिस्प्यूट कला अर्थात डिसएग्री करिछि स्वामी वाज नॉट एट ऑल एग्रीड विथ हिज फादर बापांको सहित मोटामोटी भाव से एग्री करू नाही स्वामी कौन कहूछि पिला माने हाउ कैन इट बी फादर हाउ कैन एटा केमदी हबो सपोज से कहूछि सपोज I have a lot of courage. वो पाखरे बहुत साहस अछि I have a lot of courage. And what could I do if a tiger attacked me? बाघ जदि मते अटैक कला if a tiger attacked me what could I do? वो कौन करि पारि I am a small boy no doubt I have suppose I have a lot of courage मो पाखरे बहुत साहस अछि so how could I what could I do if a tiger attacked me I cannot fight with a tiger no बाघ सहित फाइट करि परिबी नाही साहस थिले कोन हबो डिस्प्यूट करू से थ्योरी को बापांकर थ्योरी को स्वामी वाज नॉट टोटली एग्री टू हिज फादर मैं स्वामी फादर कौन कहते पिला मैंने देख लिव एलोन स्ट्रेंथ से कहले स्ट्रेंथ को छाड़ी दे लिव स्ट्रेंथ को छाड़ कैन यू प्रूव यू हैव करेज Can you prove? तो प्रूव करि परिबु कि that you have courage तो पाखरे courage अछि साहस अछि सेटा को प्रूव करि परिबु Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. Father challenged Swami ताको चैलेंज करूछंती स्वामी को से कहउछंती you have to prove it. You said you have a lot of courage and you have to prove it. तो पाखरे साहस अछि कि नहीं एटा तते प्रूव करिया पई पड़िबो प्रमाण करिया पई पड़िबो केमिति प्रमाण करिवो let me see if you can sleep alone tonight in my office room. That means you have to sleep in my office room tonight. आजी राती रे in my office room you have to sleep alone तते एकाकी ऑफिस रूम रे सोइबा पई पड़िबो this is a challenge for you you are telling about courage then this is the challenge I am giving to you Swami's father said this okay तो पिला माने देखो frightful proposition for Swami frightful it was अति भयंकर कहवा एठी ओडिया रे जदी कहू फ्राइटफुल
Proposition for Swami. Swami's father said to Swami to sleep in his office room alone. Ratire ekaki office room re soiba. This was the proposal of Swami's father. Not a proposal, it was a challenge to Swami. And this was a frightful proposition for Swami. Eta thila Swami pe gote bhayankara prastav. He had always slept beside his granny. Tar habit kon thila pila mane? What was Swami's habit? He had always slept. Koti southila se? Beside his granny. It was Swami's habit to sleep beside his granny. Taro jejema pakhare, granny pakhare, in the passage. तांकर जो पैसेज थिला, घर रो जो गलीटा थिला, सेई गली रे बुढ़ी संगरे तारो जेजेमा संगरे स्वामी used to sleep. से सोतला का. It was his habit. तार habit थिला. And any change in this arrangement. Arrangement कौन? स्वामी रो जो सोईबा arrangement. He used to sleep beside his granny. This was his habit. And if any type of change in this arrangement kept him trembling and awake all night. अर्थात जदि ये जो अभ्यास तार थिला जेजेमा सहित सोइबार इथिरे किसी परिवर्तन हो गला, एनी टाइप ऑफ चेंज हैपेंड, देन kept him trembling and awake all night. राति सारा से कौन करिवो थरिवो. तो एठी तो जणा पडुसी स्वामी वाज अ वेरी कावर्ड बॉय. बहुत भयालु डरुआ पिला थिला एवं सोइबा रो अरेंजमेंट रे जदि किछि चेंज हला, awake all night, that means he could not sleep all night. Could not sleep, सोई पारु नथिला, राति सारा से अनिद्रा हिक रहियो. Trembling, in fear, भयरे से थरिवो. That is why he always slept beside his granny. तार जेजेमा पाखरे सब बेले सोउची. तापर कोन देखिबा हमें, he hoped at first that his father was only joking. So when his father said you have to sleep in my office room alone tonight, एटा जेते बेले से कहिले, बापा कहिले आज राति रे ऑफिस रूम रे एकला सोइबो, स्वामी कोन भाबुथला, स्वामी थॉट और स्वामी होप करूथला, आशा करूथला his father was only joking. बापा जोक करूछंती, जब बापा मजाक करूछंती ए से चिंता करूथला, एटा भाबुथला से आशा करूथला. बट एटी कोन हिजे देखो, he mumbled weakly. yes हाँ कहिकी सी धीरे धीरे अस्पष्ट भाव से कहूची. yes, and स्वामी tried to change the subject. टॉपिक को चेंज करिया में चेष्टा करूची से. फादर ताको चैलेंज दे गले, फादर हैड given Swami a challenge, but Swami, he tried to change the subject, to change the topic, and he said very loudly and with a great deal of enthusiasm. Enthusiasm means उत्साह, प्रबल उत्साह, a great deal of enthusiasm. बहुत जोर, very loudly he said. देखो टॉपिक को चेंज करने में चाहूँ, ताकि जो चैलेंज दिया है चैलेंज को the Swami was trying to avoid the challenge. चेष्टा करूँ से अवॉइड करिया पे, एवं से बहुत जोर पार्टी करी कहला, और कहला, we are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are going to admit elders, अर्थात आमे वयस्क मानू आमर क्रिकेट क्लब रे एडमिट करिया पई बा एडमिट करिवु. वी आर गोइंग टू एडमिट, आमे बड़ बड़ लोकन हमर पिला मानकर क्लब रे मध्ये एंट्री करिवु, एडमिट करिवु. एवं वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स. आमे ब्रांड न्यू बैट एवं बॉल किनिवु.
and our captain has asked me to tell you. हमरो क्रिकेट क्लब रो जो टीम रो जो कैप्टन अछंती सीए कहिसंती आपन को सेटा जणैबा पई मु आपन को से कथा जणौसी यारी माध्यम रे by saying this Swami was trying to change the subject को चेंज करिया पे चेष्टा करूथला स्वामी but what happened वर्तमान देखो कोन हिची तापरे we will see about it later बापा से टू कट कर देकी कहले ठीक अछि we will see about it later देखिवा देखा जो सेटा पछ कथा फादर कटिंग बापा सेठी ता कथा को काटी देले एवं से कहले you must sleep alone hereafter से कहले you must sleep निश्चय सोइबु alone एकाकी hereafter या परठू तू कहा संगरे सोइबु नहीं you must sleep alone and Swami now realized that the matter had gone beyond his control Swami realize कला तो ये मैटर टा गोटे साधारण न्यूज़पेपर रिपोर्ट रु आरंभ होईची एवं से मैटर टा वर्तमान नाउ स्वामी रियलाइज्ड दैट इट हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल तार नियंत्रण बाहर बियॉन्ड हिज कंट्रोल एट फर्स्ट स्टार्टिंग समय रे कोन थिला पिला माने इट वाज अ चैलेंज एंड इट हैड नाउ बिकम a plain command. At first it was a challenge, but now it had become a plain command. एटा कौन हे गला वर्तमान कमांड हे गला ऑर्डर गोटे प्रकार आदेश हे गला एटा बापांकर आदेश you must sleep alone hereafter या परठू तू निश्चित भाव रे एकाकी सोइबू तो स्वामी कौन आंसर दीजिए देखो फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शैल स्लीप अलोन फादर से पुणी चाहूसी एवॉइड करिया पई सही चैलेंज को स्वामी की कौन कहिला फॉर द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ रो प्रथम रु आई शैल स्लीप अलोन आपनकर जो चैलेंज अछि मो सेटा को एक्सेप्ट करिवि बट नॉट नाउ I will accept or I will start sleeping alone from the first of next month. आसंता मास प्रथम रो मो एकला सोइबी okay no but his father said no not possible you must do it now you must do it now एटा तू निश्चित भाव रे वर्तमान करिया पई पड़िबो तते इट इज डिसग्रेसफुल पिया माने कोन तार अर्थ एटा होची गोटे लज्जाजनक कथा डिसग्रेसफुल शेमफुल लज्जा लागिबा कथा कोडे लज्जा लागिबा कथा स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी हमें प्रीवियस पैराग्राफ रे देखिले स्वामी वाज द हैबिट of sleeping beside his granny तारो जेजेमा पाखरे सोथला से तो बापा कहउसंती it is very disgraceful to sleep beside granny or mother मां पाखरे जेजेमा पाखरे like a baby किए सोए बेबी छोटा छुआ माने सोंती so it is very disgraceful एटा बहुत लज्जाजनक कथा you are sleeping beside your granny तोर जेजेमा पाखरे सोचू very disgraceful बहुत लज्जाजनक कथा you are in the second form रो अर्थ होची सेकंड स्टैंडर्ड पिला माने स्वामी वाज रीडिंग इन द सेकंड स्टैंडर्ड रे पढुची जे क्लास जोडा कहूछ हमें सेकंड क्लास रे सो दैट मींस 8 वर्ष बयस हे गेलानी एंड स्वामी वाज नॉट ए बॉय एट ऑल छोट बालक नुह दैट इज व्हाई
his father was trying to develop courage in his son or in Swami. पुओ पाखरे बापा चाहूछंती करेज डेवलप करो, साहस डेवलप हो, ब्रेवरी डेवलप हो. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up. I do not like the way जो भलिया भाबरे you are being brought up, तो जो भलिया भाबरे तते लालन पालन करा होची, जो भलिया भाबरे तते brought up करा होची, actually I do not like. बापा चाहूछंती कोन? बापा चाहूछंती bravery and courage should be developed in Swami. पुआ स्वामी भितरे bravery develop हो, courage develop हो, एटा बापांकर इच्छा. Okay, so dear students, we have completed the part 1 of this lesson. So I am going to summarize the story again. आउ थरे मु summarize कर दूची पिला माने story टा कोन थिला. तो एटी हमें देखिले the story is about a small school going boy of 8 years old. The name of the boy was Swami, the central character, main character of this story. And the story started. कौन रे स्टार्ट ହେଇଛି ପିଲାମାନେ कहानी ର आरंभ रे हम देखिले we saw Swami's father was reading a newspaper article. Newspaper article पढुथिले एवं in that article or the newspaper described the bravery of a small boy. And when the small boy was returning home by the jungle path, he came face to face with a tiger, and the boy fought with the tiger, and after some time he climbed off a tree and waited there for help. Some people came that way and killed the tiger, and the boy escaped. So this was the newspaper article, this was the newspaper report, and Swami's father was reading under the hall lamp, and at that time Swami was also there. Swami sethi basithila, ebong his father asked Swami his opinion about this newspaper article. Swami had different views on this newspaper report. Swami said the boy must be a grown-up person, not at all a boy. How could a small boy fight with a tiger? This was Swami's opinion, but his father said, do you think you are wiser than the newspaper? कौन भावुछु तू बेसी ज्ञानी newspaper too? And he also said that courage is everything. Strength and age doesn't matter, or strength and age is not important. Okay? तापरे कौन है ची argument उभय father and son भीतर है ची, and Swami he told his father, what can I do if a tiger attacked me? If suppose I have a lot of courage or I have a lot of courage, bravery. So what can I do if a tiger attacked me? And at that time, Swami's father challenged Swami, leave the strength. If you have courage, you must sleep tonight alone in my office room. Office room re ekaki soite. This was the challenge for Swami. And at that time Swami was trying to change the topic, trying to change the subject matter, and he told about the cricket club. But Swami's father did not listen to that, and he told Swami, you must sleep alone tonight in my office room. Order. This has become from a plain command, it had become a
At first it was a challenge, but now it had become a plain command. But Swami said from the first of next month I will sleep alone, father. But his father did not listen anymore. He said it is very disgraceful, it is very shameful sleeping like a baby beside granny or mother. माँ पाखरे जेजेमा पाखरे छोट पिला भलिया सोइबा, it is very disgraceful. You are now in the second standard and I don't like at all the way you are being brought up. तो पिला माने आमे आउ थरे एटा को समराइज मध्य कर देले. Let us try some exercise here. So here are some statements given below, and in these statements some wrong words or wrong phrases are mentioned, and you have to replace the wrong statement or wrong words or phrases and put a exact or correct word or phrase here. The first one is done for you. Swami's father read the report of a lad's bravery in a weekly magazine. Actually weekly magazine टा भूल अच्छी एटा हमर राइट टा कोन हम न्यूज़ पेपर. वर्तमान बाकी गुडा को तमे करिवो आंसर कहिवो पिला माने. The boy was rescued by some people who captured the tiger. Who captured the tiger. एटी कैप्चर वर्ड टा भूल अच्छी. कैप्चर जगह रे कोन ही परिवो हु कैन से. Who captured the tiger. Okay. कैप्चर जगह हमें कौन लिखी परिवा. You can see the book. Exact word is killed the tiger. Okay. The boy was rescued by some people who killed the tiger. Swami had always slept beside his mother. Mother को कोथरे रिप्लेस करिवा. Granny. Very good. Granny. Granny. Very good. Very good. Sit down. Always slept beside his granny. Next one देखो पिला मने. Swami studied in 4th grade. 4th grade. को क्लास रे पढुतला से. 4th is wrong अछि. कोन हबो एठी 4th जगह रे कोन हबो. Anyone? किंजरमा गोटे वर्ड अच्छी पिला माने गोटे फ्रेज सॉरी फ्रेज टे अच्छी. स्वामी रो बापा लास्ट को अच्छी देखो. You are in the second form. एवं पढ़िबा समय मु कहितली स्वामी was in the second standard or second grade or second standard रे से पढुतला. 2 क्लास रे पढुतला से. Okay. Swami's father proposed Swami to sleep alone in the hall. Hall is the wrong word here. Office room. What is the right word? Office room. Office Very room. good. Office room. Very good. Very good. Office room. Office room. Very good. Sit down. Office room हवा. स्वामी रो बापा ताकू ऑफिस रूम रे सोया पई कहिले. वर्तमान करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करिवो. चारि गोटी ऑप्शन अछि पिला माने. गोटे ऑप्शन टा राइट. फादर डिड नॉट लाइक स्वामी sleeping in the office room, sleeping beside his granny, sleeping beside his mother, joining the cricket club. Which one is the right answer? Upendra High School. BS High School. What? Option number 3. Sleeping beside his mother. Sleeping beside his mother. Actually, Swami's habit was sleeping beside his granny. Option actually एटा टिके wrong हे गला. ऑप्शन दबाटा टिके भूल जाईची. एक्चुअली मदर भी अछि ग्रैनी भी अछि. दीटा जाक अछि. ओके. ऑप्शन टा टिके भूल जाईची. ओके. ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू स्वामी. फ्राइटफुल प्रपोजिशन कोउटा थिला. फाइट विथ अ टाइगर, कैच द बर्गलर, स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस रूम, फाइट विथ ए लायन. कोटा हबो को ऑप्शन टा हबो. जयराम हाई स्कूल. Option A, fight with the tiger. C. Option A. C. Option C. ऑप्शन ए.
Option A, fight with a tiger. Option C. कोटा राइट है ऑप्शन सी इज द राइटफुल प्रपोजिशन फॉर स्वामी और बापा ताको चैलेंज कौन देले टू स्लीप एलोन इन द ऑफिस रूम इट वाज फादर्स चैलेंज और फादर्स चैलेंज ओके सो स्लीप एलोन इन द ऑफिस रूम दिस इज द राइटफुल प्रपोजिशन फॉर स्वामी क्वेश्चन नंबर 3 द इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू स्वामीज फादर वाज स्वामी बापा हिसाब से कोटा इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ करेज एज और हाइट व्हिच वाज इम्पोर्टेंट Option 2, courage. अच्छा सेकंड वेरी गुड करेज इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनीवन सो नंबर 4 द बॉय हु फॉट द टाइगर स्टेड ऑन द ट्री फॉर हाफ ए डे अधा दिन से पिलाटी रहिला गछ उपरे कारण कौन वो ऑप्शन टा हम ही वांटेड टू आस्क द टाइगर फ्रॉम द ट्रक वांटेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम वाज वेटिंग फॉर हेल्प डिड नॉट लाइक द टाइगर कोटा हम जागृति हाई स्कूल Option 3. Was Option 3 very waiting good. for help. was waiting for help that boy was waiting for help Option 3. okay good sit down last question Swami's father asked him to sleep alone in the office room as से कौन चाहते पिला माने एज wanted him to catch the burglar wanted him to prove that he had courage wanted him to look after the office wanted him to prove that he had strength Option Good 2. option right above option 2 very good Option 2. wanted him to prove that he had courage this was the correct answer okay so now this is a homework for you dear students prepare a list of qualities which makes a person hero अर्थात गोटे व्यक्ति को हीरो रे परिणत करने को क्वालिटी दरकार तुम से लिस्ट बनइब कौन कौन गुणावली दरकार एटा होछि तुम होमवर्क